heard about this lecture series, and some of our students also delivered their lectures here, and it's a really great initiative. So I think I'm very keen to hear uh, today's presentation. So obviously we should start it. Thank you. Thank you so much, sir, for your permission. So now, without wasting any time, I'd like to call the star speaker of today's event, Mr. Mohit Yadav from Shamlal College Evening of University of Delhi. So let's hear this intellect talk on the topic Chinese construction of power and Indian response by Mr. Mohit Yadav. So Mr. Mohit, the stage is all yours. In geopolitics, there is no space for friend or enemy. There exists only geopolitical interest. Good evening, everyone. Thanks for holding my GSTS talk. Special thanks to Dr. Kamal Nayan sir for holding my GSTS talk. Without wasting your time, let's begin with today's topic, which is Chinese construction of power and Indian response. In current scenario, every nation wants to be developed and provide best facilities, security, food, knowledge to its citizens. जैसा कि आप सभी को पता है, चाइना इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है। तो इंडिया चाइना से बहुत कुछ सीख भी सकता है और कुछ चीजों में उसे कॉशियस रहने की भी जरूरत है। इंडिया कैन लर्न लाइक हाउ टू बूस्ट इट्स इकोनॉमी, टू इंक्रीज इट्स सॉफ्ट पावर एंड मेथड्स टू प्रोवाइड हेल्थ, एजुकेशन, बैलेंस डाइट एटसेट्रा. Also how to mold foreign policies and attract foreign companies to get investment and stood a strong nation in front of UN and other world forums. If I also India need to be cautious, like China इंडिया को एक हिंड्रेंस की तरह देखता है एज ए मेजर सुपर पावर कंट्री. एक कंट्री जो चाइना को हर सेक्टर के अंदर कंपटीशन दे सकता है और चाइना की इन्फ्लुएंस और मोनोपोली को एंड कर सकता है. So China has placed its footprint and influence people in India via various operations in different sectors. So the main reasons or objective of my talk are I will discuss about China's penetration on Indian entertainment industry. Next objective, I will understanding Chinese engagement with think tanks and civil societies. Moving further, I will tell you about the various instances of misleading and false propaganda over apps and social media platforms. Next in the series, I will put some light on China's exploitation of interdependence in tech sector. In the end, I will talk about ourselves, a risk to personal data and privacy breach. At the last, I will conclude the session by own overview and perspective on this research. As it is a vast topic, so I have not included the influence of penetration in trade, economy, defense, political relationship, and a few other sectors also. China. ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में जो चीजें आती हैं लाइक चाइना इज ए नेबरिंग कंट्री, the things made in China or assembled in China, China's president Mr. Xi Jinping, and there are various other things also. So here let's discuss about some basic information of China. Its official name is People's Republic of China. The form of government is communist state, means वहां पर सिर्फ एक single party rule करती है, which is CCP, China Communist Party. It is formed in 1949 under the leadership of Mr. Mao Zedong. The official language is Standard Chinese Mandarin. Capital is Beijing and currency yuan. There is some part of India which is occupied by China, known as Aksai Chin, which you can see on the slides also. China's border runs along the state of Jammu Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Sikkim, and Arunachal Pradesh. Also, the Tibet Autonomous Region of China touch border with India. Both the nations are separated by a imaginary line as line of actual control or McMahon line. China is making subtle ways to influence the foreign policy of nations to enhance its soft power and advance its propaganda. अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं कि चाइना के अपने फुटहिल्स इंटेलिजेंस एजेंसी ने फुटहिल्स कब स्टार्ट किए, तो इट वाज द टाइम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. चाइना ने ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश आर्मी की हेल्प की अगेंस्ट द जापान. सो एट दैट टाइम चाइना एक्वायर्ड सम एसेट्स इन इंडिया. सो उसी टाइम से चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया. So first let's discuss about entertainment. Entertainment is penetration of China entertainment industry. Entertainment, the most easiest and cheapest way to influence people, put your points and present your opinion in right way.
मैं आपसे पूछता हूँ इंडिया के अंदर कौन सा टीवी चैनल है जिसकी हाईएस्ट टीआरपी है? ऑफ कोर्स द टॉप 15 चैनल्स आर ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली। सो आप खुद ही सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल्स आर ऑल अफेक्टेड ड्यू टू दिस एंड एज इट इज हेल्पफुल। So, moving further, China also used these channels apart from movies and web series. Now, over the past few years, China has been consistently trying to make inroads into Indian entertainment industry for its influence operation through the mechanism of co-production. China organized the China-India Film Co-Production Dialogue at the Beijing Film Festival in 2019 and 2020 also. Now, moving further, the various, if I talk about China's Film Association, CFA, and China Federation of Literacy and Art Circle, CFLAC, was put in place as early as 1949 and has since then been tasked with carrying out Chinese influence operation in academics, literature, and films. Several in the Beijing Film Festivals, China is able of the participation of famous cinema icons like Shah Rukh Khan, Kabir Khan, etc. Several other filmmakers and producers were also invited just a year after the media was handed over to the propaganda department of CCP in 2018. Prominent individuals in film regulatory bodies like CBFC, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, जो भी मूवी आती है वेब सीरीज आती है उनसे पहले हम सर्टिफिकेट देखते हैं AUA, you have all just seen this. So this is given by CBFC, have ensured that Chinese interests are well represented in Indian cinema. Movie Rockstar. In the movie Rockstar, you will find that earlier there was in the song there is one flag, Free Tibet, but after the involvement of the regulatory bodies, the Free Tibet was the flag was blurred and it was hide out. Also, according to the findings of Anti-Haslam, the investigative journalist from Sirf News, it was found that China is producing fake data on the success and earnings of films of some individual filmmakers and producers. रिसेंटली आपने सुना होगा आजकल एनिमे कल्चर, जैपनीज एनिमे कल्चर बहुत ज्यादा चल रहा है. किड्स एंड यूथ दे आर फैन ऑफ दिस. सो चाइना ने खुद के भी दीज एनिमे बनाए हैं, लाइक एनिमे लाइक लिंक क्लिक, डेमन किंग एंड देयर आर अदर्स. सो वहां पर सिर्फ चाइना खुद की एक वास्ट, रिच और ब्यूटीफुल हेरिटेज को शो करता है इन एनिमे के जरिए. Also, China is also showing that Kung Fu and all these martial arts are started from the China only. Entertainment की बात गेम्स के बिना नहीं हो सकती, ऑनलाइन मोबाइल गेम्स एंड पीसी गेम्स. So you have heard about PUBG. So in PUBG also, PUBG was owned by Tencent. Government banned this, and after that it was owned by Krafton, and it came in India with the name of BGMI, Battleground Mobile India. Also, there are some other mobile games like Crossfire, Clash of Clans, and also if I talk about PC games or PlayStation games, there are at currently 3 famous games all over the world, which is Valorant, GTA. You have heard about GTA Vice City a lot. Also Call of Duty games. So आप देखोगे कि जो फेमस गेम है सभी के अंदर चाइना का या तो कोई कैरेक्टर होगा या कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होगा. इफ आई टॉक अबाउट वेलोरेंट, वहां पर सेज कैरेक्टर है, ही इज फ्रॉम चाइना एंड ही इज शोन एज मोस्ट पावरफुल. सेकंड, इफ आई टॉक अबाउट GTA Vice City, देयर इज लिबर्टी गैंग व्हिच इज ऑफ चाइना एंड इट ओन्स ए लार्ज पार्ट इन GTA Vice City, GTA games, GTA 3 and GTA 4. If I told you about Call of Duty, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स डेवलप करती है एक्टिविजन. सो रिसेंटली कॉल ऑफ ड्यूटी ने मोबाइल गेम और अदर गेम्स लाइक मॉडर्न वॉरफेयर डेवलप किए एंड विद द हेल्प ऑफ टीमी स्टूडियो. टीमी स्टूडियो इज ए सब्सिडियरी ऑफ टेंसेंट एंड टेंसेंट इज ए चाइनीज फर्म. Also, Tencent owns 5% stakes at Activision. Now, let's have a look on investment and stakeholders. Chinese company Xiaomi led a $25 million investment in Hungama. Hungama had partnership with over 700 content creators and offer over 8,000 movies in Hindi, Tamil, English, Telugu, and 9 other Indian regional languages. Besides cinema, China ने
जो म्यूजिक इंडस्ट्री और वीडियो इंडस्ट्री है वहां पर भी अपना इन्फ्लुएंस फैला रखा है. लाइक गाना इज द लार्जेस्ट इंडियन कमर्शियल म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस इन विच चाइनीज internet giant Tencent has invested over $115. Tencent also funded $110 million in MX Player and other amount in Pocket FM also. So now the solution or steps government has taken or can took to stop this influence. Recently, ban on some apps is such an example. India owns CBFC, Central Board for Film Certification, must censor the content of movies, web series, animes, which hurts India's interest or hurt the interest of other images, which is showing as false propaganda and Chinese agenda. Also, government recently notified guidelines in digital media ethics 2021 to regulate OTT platforms. OTT platforms, you know that Netflix, Amazon, Disney Hotstar, and others. If I talk about regulation on games, Interministerial Task Force was set up by Ministry of Electronics and Information Technology to regulate the online games, with online gambling also going on, and money control like we purchase skins and other battle passes. Now moving ahead, let's talk about Chinese engagement with think tanks and civil societies. There are lots of examples of civil societies and organizations who favors the sentiment of China without thinking about India's national interest and sovereignty. The organization foundation is aggressively running a program called China Study Centers to promote pro-China sentiments in India. So जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर दिस स्टडी सेंटर्स को प्रोमोट करती है, सेटअप करवाती है और वहां पर उनकी फेलोशिप के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, they are made to work on China-based topics. Respected listeners, you have also heard about Confucius Institutes of China spread across whole world. Confucius Institute are public education and cultural promotion programs funded and arranged by China International Education Foundation. But they serve as a vehicle for China for industrial and military espionage as well as Chinese students who are studying abroad. Another major organization named as Young Leaders had organized the China-India Youth Dialogue at the Embassy of China in New Delhi. And this is funded by Chinese Embassy itself. It runs many youth exchange programs. Such is the level of Chinese penetration in Indian intellectual space that the youth organization went on to sign a memorandum of understanding with All China Youth Foundation, ACYF, the youth wing of China Communist Party, same as ABVP और NSUI है हमारे इंडिया के अंदर. So ACYF is dedicated to carrying out submersive operation worldwide. Further, एक prestigious think tank ORF, Observer Research Foundation, जो कि कहा जाता है कि बहुत पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर, recently received a donation of rupees 1.76 crore from Chinese government. It also received rupees 1.26 crore in 2016, rupees 50 lakh in 2017. So it's the list of such type of donation and investments to these civil societies going on. You can check it on the article published by Mr. Rakesh Kissing on Delhi Pioneer by yourself. There is also a Lutean think tank dedicated to Chinese study, is aggressively trying to build pro-China sentiments in India through questionable studies and analysis. लेकिन आयरनी यहाँ पर ये है कि ये सिर्फ चाइना को एक गुड लाइट के अंदर शो करता है. इट नेवर टॉक अबाउट द चाइना एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा, हांगकांग क्राइसिस, ह्यूमन राइट वायलेशन ऑफ उइगर मुस्लिम्स, तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट एंड मास स्केयर. Even China floated the ICECC, Indo-China Economic and Cultural Council. So it floated to influence Indian opinion leaders and policymakers. It runs a magazine with the name of India-China Chronicle, which shows the diplomatic relationship of India and China. The recent magazine, as you can see on the screen, the title is BRI Boycott, the foreign policy risk. So आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत कंट्रीज की एक इंडिया मैगजीन है, लेकिन फिर भी इट इज इन द प्रो सेंटिमेंट्स, शोइंग द प्रो सेंटिमेंट्स ऑफ China only.
It's time for solution or countermeasures government has taken so far. It is not that government has not taken any step. India has put high tariffs and taxes from China. ये खुद सेक्रेटरी जनरल ऑफ ICECC ने कहा है कि high tariffs are not good for India-China diplomatic relationship. Investigative agencies are keeping eyes on Confucius Institute as well as the civil societies and think tanks. As an example, अभी PFI बैन किया गवर्नमेंट ने. So it is a just example कि investigative agencies are keeping an eye. New laws made in which think tanks और civil societies को time to time show करना पड़ेगा कि उनको donation और investment कहाँ से मिल रही है. Government ने scrutiny of documents during youth exchange program भी tighter की है. Now let's talk about India's media and China's usage of it as stepping stone. Is the example of it is the detained journalist Rajiv Sharma who published in the Diplomat title The Dalai Lama Throne. Sharma argued that the Dalai Lama was a major factor behind China's aggression and professed the need for India to hand him over to China. Similarly, another article was published titled Why the Dalai Lama is Becoming the Biggest Bone of Contention Between India and China. Along with print media, China has also made inroads into the Indian wire service. Recently, the interview by PTI, Press Trust of India, is example. Notably, China ने also invest किया इंडिया के top news channels के अंदर, like ByteDance spent $25 million in Daily Hunt. So, Indian Army and Government of India banned Daily Hunt on the suspicion of data mining activities. Tencent lead a 10 million investment in NewsDog. हमेशा ये नहीं है कि डायरेक्ट स्टेक से इन्वेस्ट करते हैं, कई बार ये कि दूसरी कंपनीज के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट को किया जाता है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट न्यूज़डॉग इज ओन्ड बाय ए हांगकांग फर्म. सो टेंसेंट ने हांगकांग की फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, स्टेक्स परचेज किए, सो डायरेक्टली न्यूज़डॉग भी इसके अंडर आ गया. सो द चाइनीज ओन न्यूज प्लेटफॉर्म्स focus and reach in local Indian language besides Hindi and English and can become the greatest threat to India's internal stability and peace. Interestingly, the radio channel has also established CRI, China Radio International Listeners Club, in several parts of Tamil Nadu to ensure it makes inroads into the remotest areas of states. ऐसे ये नहीं कि सिर्फ सिंपल एग्जांपल्स हैं, जो फेमस न्यूज़पेपर्स हैं लाइक हिंदुस्तान टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की अंडर द टाइटल चाइना वॉच, स्पॉन्सर्ड बाय चाइनीज गवर्नमेंट और फाइनेंस बाय द सप्लीमेंट कैरीड सेवरल प्रोपेगेंडा पीसेस हाइलाइटिंग चाइना's सक्सेस इन इकोलॉजी, हाउसिंग, जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द प्रोपेगेंडा आर्टिकल presented China as Masiha of Tibet and argued about development, economic prosperity, social stability, ethnic unity, and religious freedom in Tibet since the 1950 under the communist regime. मुझे तो इस बात पर बहुत हंसी आती है कि चाइना ने डिप्लोमेटिक लिमिट्स के बावजूद इंडिया के मीडिया हाउसेस को भी वार्निंग्स एंड थ्रेट्स भेजी जब इंडियन हाउसेस ने कवर द कवरेज ऑफ ताइवान नेशनल डे एंड प्रोवाइडिंग स्पेस एंड time to Taiwan foreign ministers for its interview by India Today. Let's discuss about apps and funding from China. Investments were done to famous apps like ShareChat, Hike Messenger, Grinda, a hookup app used by LGBT community and highly popular in India. There are various pro-Chinese handles with the help of few small politicians, journalists, as well as Chinese boards have also been able to trend anti-India hashtags or Twitter several times. All these are on the Sunday Guardian news portal. Also, a number of defense experts contributed the strengthening the China's propaganda by tweets, comments during standoff and border skirmish, trying to create a fear psychosis and morally defeat Indian soldiers without even going to war. This is called the psychological warfare is going on. So same way, if I talk about the hackers, the ProRepublica prominent news portal shows that the Chinese hackers has hacked the account of famous YouTubers, streamers, influencers all across the world and India also, and then post the comments, tweets through these accounts to spread its false propaganda for Chinese agenda. Now,
what are the steps taken by government or these social media platforms? Sometimes social media platforms or companies resort to take harsh action and measures mainly out of profit reasons. Example, YouTube. Because YouTube is clearly eyeing the enormous digital market that China has to offer with its huge population and cheap technological outreach. And China के अंदर population ज़्यादा है, तो वहाँ पर market भी अच्छा होगा YouTube का. On the other hand, Twitter suspended more than 5,000 suspended Chinese state-controlled accounts and banned 2 lakh related accounts that had been created but were largely inactive. Also, TRAI, Telecom Regulatory Authority of India, put recommendation for the Complaint Commission of Press in the year 2020. अगर आपने देखा होगा पहले से आप व्हाट्सएप या फिर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करें, आप पहले एक मैसेज को शेयर या सेंड कर सकते हैं जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, लेकिन रिसेंटली अब आप सिर्फ 5 ही कॉन्टेक्ट को एट ए टाइम सेंड कर सकते हो दिस मैसेज को. दिस इज द चेंज. ऑल्सो गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइंस और मीडिया एथिक्स के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बताना होगा कि ये हेटफुल मैसेज या कंटेंट का ओरिजिनेटर कौन है और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. इफ आई टॉक अबाउट ब्रांड्स, or some brands pulled out their advertisements from social media platforms and newspapers, and they share that these social media platforms are hesitant to take action against China's propaganda and it is against the national integrity. Now let's have a look on China's exploitation of tech sector, an unchecked area of exploitation. And the unchecked area of China's influence is the audit of corporate social responsibility initiative, CSR, corporate social responsibility. The word itself shows corporate, social and responsibility. It is a responsibility of corporate houses, firms, that they must give funds and money for the development of humankind, research and all these things. The ambiguity and misuse of CSR funds have led to deep concern in India's civil society and strategic community. Sometimes Chinese companies misuse the business and trade laws by finding loopholes in policies, appointing Chinese nationals as its India's directors as to ensure direct control, targeting impressive investment as part of CSR activities, and maintaining huge team of lawyers and top advocates in India, जो कि इन कंपनीज के लिए अपने केस फाइल करते हैं, CSR एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट पुट करते हैं. All these data are on the Financial Express and CSR vision. Now, interestingly, I have come here with some facts of ZTE Telecom. It's private limited, it's Chinese firm, and BSNL. आपको पता है कि BSNL एक मोबाइल एंड इंटरनेट प्रोवाइडर, गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है. So, and currently ZTE is working to set up 5G in India and supplying its mobile equipment to state-run BSNL. More than 44% of mobile network equipment of BSNL is sourced from ZTE and 9% from Huawei, another Chinese firm. Tencent have significant influence on the powerful industry body and lobby group IAMAI, Internet and Mobile Association of India, and have successfully been pushing company interest through the Indian decision making. Here is a small list of investment in Indian startups across various sectors. आपने देखा होगा कि investment और stake हर sectors के अंदर है. If you see on the screen, you will find out that the Chinese firms have invested in famous startups like Big Basket, Daily Hunt, Paytm, Baidu, Gaana, Dream11, and all such type of lists goes on. I have included some part only. The source is Startup Toki. Now, how to overcome this dependence and exploitation of China? Government has shifted its import from China to another countries, like purchasing goods from another country. Also, recently the famous and successful initiative Make in India campaign. Now, government has also put high taxes in good imports, like जो कुछ goods imports इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, इंडिया ने हाई टैक्सेस लगा रखे हैं, और उन हाई टैक्सेस की वजह से जो असेंबल होते हैं बाहर, तो वो कंपनीज चाहते हैं कि वो खुद अपनी फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्री सेटअप करे कि वो असेंबल भी इधर ही करे. ऑल्सो गवर्नमेंट हैज ओपन इट्स पेपर वर्क एंड पॉलिसीज सो दैट इन्वेस्टमेंट कैन कम इजीली. If I talk about foreign direct investment, FDI,
So government ने out of 300 proposals, only 88 proposals were selected of China. Now this is the time to speak about ourselves. A risk to personal data and privacy breach पे हमने बात की, Indian media. Now इस time हम खुद के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं. China has their own version of all apps like Alibaba, China's Amazon, Baidu, China's Google, and WeChat, China's Facebook. It is known as ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना कि इन सब एप्स को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाइना खुद की कंट्री के अंदर अलाउड नहीं करता है, लेकिन इन सब के अंदर चाइना के अकाउंट है टू स्प्रेड इज फॉल्स प्रोपेगेंडा एंड चाइनीज एजेंडा एंड नॉलेज इज कंसिडर्ड एज पावर. चाइना इज यूजिंग दिस डाटा. चाइना इंटेंड्स टू एडवांस इट्स ओन इंटरेस्ट सोशियोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली. अगर मैं बात करूं ईयर 2020 और 2021 की, तो वहां पर सबसे पहले गवर्नमेंट ने 59 एप्स बैन किए थे, उनके अंदर मोस्टली चाइना के थे. उसके बाद एट दैट टाइम आउट ऑफ टॉप 100 टॉप पॉपुलर यूज एप्स इन इंडिया 44 आर फ्रॉम चाइना ओनली. मोस्ट ऑफ अस आफ्टर नाउ और बात करूं खुद के बारे में कि हम कुछ एप्स इंस्टॉल करते हैं एंड एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस लाइसेंस पॉलिसी विदाउट रीडिंग देम. सेम केस मेरे साथ भी है. So here are some reasons you know very well. Like we trust the Google Play Store, Apple iStore, Microsoft Store. Also, we don't want to waste our time on reading these policies, terms and conditions. Also, there are some terms or policy words which we cannot understand easily. So sometimes these Chinese firms and other firms also took benefit and do the data mining like activities. China is even trying to steal data of various institutions like DRDO, PARC, other research organizations, famous MNC, and unicorn of India by various regular cyber attacks. Recently, Mumbai blackout. It was said that the Mumbai blackout, the Chinese hackers were behind that. Also, TikTok, Share.it, and other apps are accused of serious data breaches and privacy intrusions. अगर हमने देखा होगा कि हम कभी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की बात करते हैं या फिर आपस दोस्तों में बात करें तो हमने देखा होगा कि नेक्स्ट डे ही किसी बैंक की तरफ से हमारे पास कॉल आ जाती है. सेम है अगर हम कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, तो गूगल के अंदर या फिर किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे पास सजेशंस आने लग जाते हैं. तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ डाटा ब्रेचेस. Also, now that this time, if I talk about servers, like all these Chinese companies place their servers in outside of India. Servers means storage facilities. So the Indian companies these Chinese companies place their servers outside India, and Indian agencies face the brunt when they cannot retrieve data from tech giants as part of their security measures. Now, government actions or an individual, what we can do to protect our data. Always keep two-step verification, keep strong and different passwords, which you can remember easily. Only allow specific permissions. Now, government has recently banned 250 apps under the section 69A of the Information Technology Act 2000. Supreme Court ने भी कहा है कि privacy is the fundamental right. IT Minister Ashwin Kumar appointed expert penal court to draft new data protection bill headed by previous CJI B.M. Sri Krishna. ये नहीं कि गवर्नमेंट के पास प्रूफ थे तभी इन एप्स को बैन किया है. गवर्नमेंट ने कुछ एप्स को ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन भी बैन किया है एंड पॉलिसीज बनाई है कि सर्वर्स को इंडिया के अंदर ही रखना होगा. अगर आप अपने सर्वर्स इंडिया के अंदर नहीं रख रहे तो या तो आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन कंपनी को बेच दो एंड अदर्स. एट लास्ट आई कंक्लूड माय टॉक बाय सेइंग दैट like bad domestic policy can defeat you but foreign policy can kill you. China has made significant inroads into numerous Indian sectors in the past few years. China has utilized apps, social media, think tanks, journalists, and other organizations, especially with Marxist tendencies, to proliferate its influence and interest in India. In its desperate attempt, China is leaving no stone unturned to become the superpower and as a supremacy. China is showing seeds of discord within Indian multicultural democratic framework. चाइना ने कुछ कंट्रीज को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया है. रिसेंटली एग्जांपल श्रीलंका, पाकिस्तान एंड सम अदर अफ्रीकन कंट्रीज. बट रिसेंटली इंडिया टोटली डिपेंड नहीं है. चाइना भी इंडिया के ऊपर ऑन सम गुड्स China is also dependent. So we are not under debt trap and over dependent on China. Also,
government is making some policies to stop this false propaganda and increasing China's monopoly. Whole world have understood the making China's evil desire and making amendments as per the needs time to time. रिसेंटली गवर्नमेंट के जो न्यू डाटा प्रोटेक्शन बिल है, तो गवर्नमेंट यूरोपियन यूनियन के डाटा प्रोटेक्शन बिल है, वहां से भी कुछ पार्ट्स लिए हैं. So, as people of India, it's our duty. We keep ourselves aware about what action or policies are better of us and don't blindly follow some reports, media channels. अगर मैं मीडिया चैनल्स की बात करूं, अगर आपको अभी कोई पॉलिसी आ रही है, अगर आपको मेरिट्स देखनी है, तो यू कैन लिसन मिस्टर सुधीर चौधरी, और अगर आपको डीमेरिट्स देखनी है, यू कैन लिसन मिस्टर रवीश कुमार. So just take good data and decide what is good for us, our country and our future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Mr. Mohit, for this commendable and praiseworthy presentation. It was truly amazing. Now, it's time to solve some queries, and the first question is from Ms. Shubhi Singh. She asks, चाइना के शोज हमारे इंडिया में डब होकर रीजनल लैंग्वेज में आ रहे हैं, वो हम तक पहुंच रहे हैं, तो क्या हमारी गवर्नमेंट के पास कोई सॉल्यूशन है इससे काउंटर करने का, और क्या हमारी गवर्नमेंट इन शोज को बैन कर सकती है? अकॉर्डिंग टू मी, गवर्नमेंट पूरी तरह इन एप्स को या फिर शोज को बैन नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज ऑल पार्ट ऑफ इंडिया ने 1922 के अंदर अपने मार्केट ओपन कर दिया था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लोकलाइजेशन. तो वो कंप्लीटली बैन नहीं कर सकती, लेकिन अगर कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को या अदर कंट्रीज को इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसके अंदर सेंसरशिप लगा सकती है. एंड स्पेशली सीबीएफसी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. रिसेंटली जो एनिमे आ रही है, शोज आ रही है, वो रिसेंटली यही डेपिक्ट करते हैं कि चाइना की रिच एंड वास्ट हेरिटेज. रिसेंटली आपने देखा होगा कि शैंग-ची, इट वाज क्रिएटेड इन 1975 अंडर दैट कॉमिक, लेकिन रिसेंटली अभी उसके ऊपर मूवी बनी है. So it was just China's investment which is going on at world level also. So my opinion is that government cannot fully ban all these TV channels, these shows, but take some censor some content or some part of it. Okay. तो अगला क्वेश्चन मिस्टर पुनीत की तरफ से है. वो पूछते हैं, गवर्नमेंट हमारी यूनिवर्सिटीज में चाइनीज लैंग्वेज को क्यों नहीं इंपॉर्टेंस देती है, ताकि हम चाइनीज लैंग्वेज समझ सके और उनकी सोच तक पहुंच सके उन्हें इनकाउंटर करने के लिए? अगर मैं बात if I talk about Delhi University only, there are some courses in which you can choose Chinese language, other foreign languages. Also there are diplomas of 1 year for learning all these languages. लेकिन there are some universities वहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज को नहीं किया जाता है, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज लेनी है, लोगों को इंटरेस्ट है करेंटली बीएससी, डीएस सिंपल, जो उनके इंटरेस्ट है. रिसेंटली फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों का. इसके पीछे भी कई रीजंस है, लाइक फॉरेन इज द जॉब्स क्रिएटेड ऑन दिस एस्पेक्ट, द वेयर्स अदर थिंग्स, जॉब्स क्रिएटेड. अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये भी बहुत कम है, आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, आपकी मनी लगती है, तो इसलिए इंटरेस्ट भी कम है. और गवर्नमेंट ने भी लाइक कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट आई टॉक अबाउट, तो वहां पर वो प्रमोट करते हैं कि चाइना कल्चर और लैंग्वेज को आपस में एक्सचेंज करे, चाइना इंडिया के. तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स हैं, और लाइक जेएनयू के अंदर भी, दीज आर ऑल फेमस फॉर फॉरेन लैंग्वेज स्टडीज. Shall I resolve the query? Yes, yes. So next question is from Miss Sneha. She asks, why has India not been officially screaming since May 2020 itself that China has occupied our land, when some so-called experts have been saying that all along? तो गवर्नमेंट नॉर्मल पब्लिक को नहीं बताना चाहता कि टेंशन क्या है. It didn't want to create a fear psychosis among Indian population only. वहां पर जो ऑफिसर्स हैं, the soldiers हैं, they knew very well that what is going on. अगर if I talk about the recent clash of जो in 2020 आप बता रहे हैं, मई 2021 के अंदर, तो वहां पर finger 4 और finger 8, there are total 12 finger means points. तो वहां पर इंडिया फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकता था, चाइना फिंगर 4 तक. लेकिन और वहां पर दे कैन डू द पेट्रोलिंग विदाउट वेपन्स, दे आर ओनली अलाउड पेट्रोलिंग विदाउट वेपन. लेकिन चाइना फिंगर 8 तक आ गया, और वहां पर सो सेम वे
due to that reason, India ने force किया. India also went to finger force. So after the various diplomatic talks and talks between the various military leaders, it was all sorted out. Okay, so next question is from Mr. Shivanshu. ये पूछते हैं, आपको नहीं लगता कि हमें खुद अवेयर होना चाहिए कि हम चाइनीज ऐप का यूज ही ना करें, या गवर्नमेंट को पूरी तरीके से इन्हें बैन कर देना चाहिए? आफ्टर ऑल हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट में है. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ड्यू टू द एज ए ओपन मार्केट, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, तो हम पूरी तरह इन ऐप्स को बैन नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज इन ऐप्स के ऊपर सेंसर्स लगा सकती है ओवर द सस्पिशन. एंड अगर वो कोई डाटा माइनिंग एक्टिविटीज कर दे, नॉट ओनली चाइना, होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की जो भी एप्स है. लेकिन ये बेटर तभी होगा कि इंडिया खुद के एप्स क्रिएट करे. लाइक इन द रिस्पॉन्स टू ट्विटर, आफ्टर द बैन ऑफ दीज एप्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप कुकू एज रिस्पॉन्स टू ट्विटर, चिंगारी as response to TikTok, and there are other apps also which government has created. Government has also created its own app store. So they are also a map for the in response to Google Maps. So it is better for India that all these apps and all these things, apps, social media platforms, they are developed in India only and Indian research institutes. And वो ये तब भी ज्यादा होगा अगर वो सर्वर्स इंडिया के अंदर ही रखे जाएं. Okay, very well answered, Mr. Mohit. Now, the last question is from my side. Tell us, what was your experience throughout the journey of your talk, and what do you feel about this initiative? अगर मैं बात करूं कि आई थिंक आई कैन, GSTS ने जितनी हेल्प मेरी की है मेरा कंटेंट क्रिएशन में, या फिर वैसे भी मुझे मोरली बूस्ट किया है, बार बार पूछा है कि कोई जरूरत है, तो आई थिंक मैं एक अलग से प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ इस चीज के ऊपर कि हाउ GSTS इज सो मच हेल्पफुल. ऑल्सो देखा है कि अगर हम मना कर रहे हैं कि हमें कंटेंट की जरूरत नहीं है, कि कुछ फिर भी कंटेंट हम ऐड कर पाते हैं कि हाँ अब इसको मैं कट करके और ऐड कर दूं, तो हम मना कर देते हैं कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है. लेकिन फिर भी GSTS के जो मॉडरेटर्स हैं लाइक मिस सुबी, मिस समृद्धि, इन्होंने हेल्प की. मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट मेरे पास भेजा. इन्होंने मेरे को बताया कि यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, यू कैन डू दैट, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, एंड देयर आर वेरियस अदर थिंग्स आल्सो. So according to me, really GSTS is so helpful for my own confidence also, and I have learned a lot from this.